Good morning, good afternoon, good night, or whatever time you are watching this video. Welcome, guys, to my video, and it's my one of the beginning vlogs. And this one, especially this one, is based on cooking. Yes, cooking. So in this video, and I want to mention one thing, that I am a person who has zero, a big fat zero interest in cooking. Yeah, but on my mom's birthday, my passion for cooking just blasted, and it feels like I have to make something for her. So in this video, I gonna make kheer for her birthday, and it's which is called Payesh also in Bengali. All Bengalis out there knows Payesh. By the way, Bengalis love spice too much, especially in my case. I love Payesh. So without any further blah blah blah, let's go. तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ये राशि Hola! So it's me as a chef version and pro chef version. Pro chef version. Pro chef version. It's the one and only Eagle Double G. And I am making the kheer. So it's the ingredients I already have ready. I got ready all the ingredients out there, and I'll show you them. So let's see the ingredients out there. It's Govindabhog rice, and here we sauteed it with some ghee, and here we have bay leaves or tej patta, raisins, it's almonds and cashews and cardamoms as well. The raisins, almonds and cashews are also roasted in ghee, and it's milk which is mixed with water, 2 cups of milk and 1 cup of water. And also we gonna don't use the sugar, we gonna use the jaggery, and that's it. Let's see. At first, yes, set the heat at 500 and then first add the milk. Guys, pray for me because it's my first time, and with one hand, don't judge me. Pro chef attitude with first time. First time I'm making the kheer, and my attitude is like I'm the pro, legend, ultra, max, like iPhone 12. First we let the milk to boil. When it is already boiled, when it will boiled, then we add the rice and the cardamoms and the bay leaves as well. Now, 20 minutes later. A few moments later. Let's increase the heat. I am impatient enough.
because it's only 4 minutes and the milk is not boiled yet and I am already done with it. One eternity later. At last it's boiled. Now add this. Nice. मैंने मेरी मम्मी को आने को मना किया था पर वो आए जा रही है क्योंकि मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं कुछ गड़बड़ कर दूंगी। तो मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन पकड़ा दिया क्योंकि मैं एक हाथ से नहीं कर पा रही। चलेगा पता चल। मम्मी मुझे भी दिखाओ, कुछ बोलो। क्या बोलूं? एनीथिंग वांट टू से? मेरी बेटी ने आज मुझे खीर बना के खिला रही है मेरे जन्मदिन पर। हाँ, मैं मम्मी इतनी शाय नहीं है जितनी शाय भी बन रही है। पता नहीं क्यों कैमरा शाय बन गई अचानक से। ओए क्या भंगड़ा करूं मैं? ओए बल्ले बल्ले। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बना ले चलो, आपके लिए तैयारी स्टार्ट हो गया। बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है। कुछ भी नहीं किया, अभी बोल रहे बढ़िया स्मेल आ रही। क्या करूं? अब ये भी दे देंगे हम दिस एंड फाटअच्छी मैं फाटिए ना पारबो फाटी से। तो हमें इसको ऐसे फोड़ के देना होता है, जो मुझे अभी पता चला। नहीं पता था, इतनी भी कच्ची नहीं हूँ। वीडियो करते करते मम्मी ने ये साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पता है। So we added bay leaves and the cardamoms. Now let this rest in peace. ढाका दे दो। तब वो चावल बन रहा है, तब तक ये सब तोड़ लिया है। क्या है ये? क्या वो रोस्टेड कैशूज आमंड सब तोड़ लिया। और ये न्यू मेंबर आया है, इसका नाम है जगेरी। तो हम यही देंगे गुड़ है। अच्छा, तो ये है डेट्स जगेरी, मीन्स खजूर का गुड़। सेंटेड है ये विंटर्स का स्पेशल होता है। एंड हम शुगर नहीं यूज़ करने वाले क्योंकि शुगर से ये हेल्दी भी होता है और खीर खाने में भी टेस्टी भी होता है इससे। तो यही यूज़ करेंगे और इससे खीर थोड़ी सी कम मीठी होती है। तो जिनको कम मीठी खीर पसंद है तो उनके लिए और भी अच्छा है। हो जा जल्दी जल्दी हो जा। 6.5 hours later. So यहाँ पे खीर ऑलरेडी हो चुकी है। हम अभी we're gonna add a little bit, a pinch of salt. A pinch of salt. Here we're gonna add a pinch of salt. थोड़ा सा।
ताकि ये चावल एकदम मड जैसा ना हो जाए, एकदम पिघल के एकदम एक साथ लग ना जाए। दैट्स वाई वी एडेड द नमक, सॉल्ट। माँ सो इसको अभी चलाते जाना है, क्योंकि वरना ये नीचे लग जा सकता है थोड़ा सा। पर ऐसे इस इंडक्शन एंड नॉन स्टिक में नहीं लगता उतना, बट ये मैंने मम्मी से ही सीखा है कैसे चलाना चाहिए इसको, थोड़ा सा बहुत अभी नमक देने के बाद। टिरी 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 टिरी। एंड अभी ये हीट 1000 पे है, क्योंकि अभी इसको अभी हीट 1000 पे है, क्योंकि अभी इसको बॉयल होना देना का बहुत ज़रूरी है। मुझे ना बहुत शेफ़ संजीव कपूर जैसी फीलिंग आ रही है। मतलब अगर कोई अगर किसी को कुकिंग की शौक़ ना हो और वो अचानक से एक दिन कुकिंग करे तो उसको तो कैसा लगेगा। मुझे भी वैसा ही लग रहा है। जैसे कुकिंग मुझे बिल्कुल भी उतना पसंद नहीं है। बहुत लोगों को पसंद होता है, शौक़ होता है, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं है। एंड अभी हीट घटा दिया एंड अभी हम ऐड करेंगे ये सब। अभी हम ये सभी चीज़ें ऐड कर देंगे, जैसे कि ये जो जगेरी, क्योंकि इसको पिघलना भी है। ये जगेरी तोड़ने में जो लग रहा है खली को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि जगेरी फ्रिज में रहता है ना, तो ऐसे बन जाते हैं, मतलब एकदम। एंड रेजिन्स भी ऐड कर देंगे हम साथ ही साथ। लगे हाथ शादी। तो अभी इसको पिघलना है, वरना मीठा नहीं होगा। पिघल जा, जल्दी पिघल जा। इसको हम तोड़ भी सकते हैं थोड़ा बहुत पिघलाने के लिए, तो इसको थोड़ा चलाना पड़ेगा ताकि पिघल जाए जल्दी। हम इसको तोड़ देंगे थोड़ा बहुत ताकि जल्दी पिघल जाए। मतलब ये जगेरीज ऐसे हो जाता है ना, ये गुड़ यानी जगेरी यानी गुड़, एक ही बात है। चलो हिंदी हो या इंग्लिश लैंग्वेज से क्या फ़र्क पड़ता है, आपको समझ में तो आ रहा है ना। यू कैन सी द चेंज ऑफ द कलर। ये जितना मेल्ट होगा, ये गुड़ जितना मेल्ट होगा उतना ये कलर चेंज हो जाएगा। एंड खीर बेसिकली अगर हम शुगर देते हैं तो वाइट होता है, एंड ये ब्राउनिश होता है एकदम। सॉरी, ये कैमरा थोड़ा इधर उधर जा रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से ऐसे कर रही हूँ ना, इसीलिए। क्योंकि वो आदत नहीं है, मैं थोड़ी ऐसे ही प्रोशर चिल्ला रही हूँ थग लाइफ की तरह, बट थोड़ी ना मैं प्रोशर। तो ये है, जगेरीज ऑलमोस्ट मेल्ट हो गए सारे पीसेस। अभी इट्स ऑलमोस्ट। अभी हम हीट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 500 कर देंगे, क्योंकि ये अभी बहुत पतला है। इसको थोड़ा सा मैं 800 করে দিয়েছিলাম। ইয়েগুলো আমেজগুলো তো দেবো না, তাকে দিয়ে দেবো। কি বলছো, দিয়ে দেবো? একটা গুড় থেকে গিয়েছিল। গোটাগুলো দিস না, গোটাগুলো শেষে দিবি ওপরে। আমার ভিডিওতেও তুমি আমাকে বকছো। এগুলো আমি তো ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দেবো।
हमने काजूज एंड आमंड्स जो पीसेस किए हुए थे वो भी ऐड कर दिए। এবার কি হাজারে করে দেবো না ঘন হয়নি বলেই তো বলছি হাজারে করে দেবো। এবার কি এটা ধরে যেতে পারে চালাবো মাঝে মাঝে। तो गाइस आपको मेरी वीडियो में 3 लैंग्वेजेस सुनने को मिल रही है, बंगाली, इंग्लिश, हिंदी। एक्चुअली बंगाली है इसीलिए कभी कभी बंगाली निकल रहा है, हिंदी भी बोल लेते हैं, इंग्लिश भी बोल लेते हैं, जो लैंग्वेज आएगा सभी बोल लेंगे। मज़ा मराठी भी आए, सब कुछ आता है, मतलब सब कुछ नहीं आता, कुछ कुछ लैंग्वेज आ जाते हैं। तो लैंग्वेज की चिंता मत करो, फील को समझो। मतलब कोई अनपैशनेट कुकर कुकिंग कर रहा है जिसको कुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी ये जो स्टेज है ये अभी वो कढ़ाई में लग जाता है थोड़ा, उसको जल जाना भी बोलते हैं। तो इस तरह से चलाते जाना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। मैं चला रही हूँ इसीलिए। और ये इस टाइम पे इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है, और डेंसिटी ना बढ़े तो खीर अच्छा नहीं लगता। पतला राजधानी एक्सप्रेस की तरह खीर अच्छा तो नहीं लगता है। एंड इट्स बिलीव मी गाइज, it smells too good. I can't believe I made this. I made this. And it's done already. Done. मम्मी अब मम्मी बाद में फीडबैक देगी कि कैसा हुआ, क्योंकि पूरा ऑलमोस्ट मैंने ही बनाया है। मम्मी ने थोड़ी बहुत हेल्प कर दिया, पर ऑलमोस्ट मैंने ही बनाया। मैं किसी को क्रेडिट नहीं देना चाहती। सो देखते हैं बाद में कि क्या होता है। तो अभी मम्मी खा के मुझे फीडबैक देगी कि कैसा है, कैसा बना है। Oh no, oh no, oh no, no, बोलो no, बोलो no, बोलो। no. ऑसम बना है एकदम। झूठी या सच्ची? बिल्कुल सच्ची, मुंह देख के तो नहीं लग रहा है। बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत ही यम्मी टेस्ट एकदम। सच्ची? बिल्कुल नहीं लग रहा है, मुझे कुकिंग का शौक तो नहीं है। बिल्कुल सच्ची में बहुत बढ़िया बनी है। चलो पसंद आ गया, बर्थडे गर्ल को यही काफ़ी है। तुम बाय बोला दो, आउट्रो दिए दो। बाय। If you enjoyed watching my video, please do like, comment and share. And if you're new here, please subscribe. Bye bye.